Okay, so student, the topic of the day is Pythagoras theorem, right? So Pythagoras theorem is strictly to apply on right angle triangles to find the length of a side of any right angle triangle. We are unable to use Pythagoras theorem for any other than right angle triangle. So that's why we will use Pythagoras theorem on right angle triangle. हम राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा किसी और ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट. तो राइट एंगल ट्राइंगल की आइडेंटिफिकेशन हमें पता है सबको कि suppose that if we have a triangle just like this, ABC is a triangle, and in right angle triangle we must have one angle is 90-degree angle. So that this is your 90-degree angle at B. So ABC is your right angle triangle. So identification of right angle triangle का first aspect ये है कि इसमें at least एक angle 90 डिग्री का होना चाहिए, राइट. जस्ट मीन वन एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए. और इसके अलावा इसका जो ऑपोजिट टू 90 डिग्री साइड है दैट वुड बी योर हाइपोटेन्यूज. And we can take any other two sides as a base and as a perpendicular. Suppose that we can take AB is our base, and CB or BC is our perpendicular. So there are three sides of a right angle triangle: hypotenuse, base, and perpendicular. So hypotenuse is the side which is opposite to 90-degree angle. अदर टू साइड्स को अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं, कोई सी भी बेस और कोई सी भी परपेंडिकुलर, लेकिन ये उस टाइम तक ले सकते हैं इफ वी डोंट हैव एनी अदर एंगल अदर देन 90 डिग्री, यानी 90 के अलावा कोई भी एंगल आपको गिवन नहीं है, राइट. अच्छा, अब हम आते हैं कि हम किस एस्पेक्ट पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पाइथागोरस थ्योरम is strictly apply on right angle triangle, right. So Pythagoras theorem on right triangles. राइट एंगल ट्राइंगल. और सेकंड एस्पेक्ट ये है कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज हो सकता है, ठीक है. इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड of a right triangle. पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला में क्योंकि एंगल नहीं आता, सो दैट्स व्हाई इसको हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं. हम इसको एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज नहीं कर सकते. सो व्हाट इज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम? So I'm writing in short form Pythagoras theorem. This is your hypotenuse square is equals to your base square plus your perpendicular square, right? So suppose that if we have a triangle like ABC with the labeling alphabet, suppose that A, B, and C, and your B angle is at your 90 degree, and we have to find opposite to hypotenuse, opposite to 90 degree, that is your hypotenuse, we have to find it as x, and this is your 3 centimeter, and here is your 4 centimeter, and we have to find x. So we know that the opposite to 90 degree is your hypotenuse, and other two sides, one is base and the second one is your perpendicular. So we will apply or substitute all the values in given formula. So we can write it as in the short form: hypotenuse square is equals to base square plus
perpendicular square. So what is hypotenuse here? This is your x. So we can take it as x square. Base is your 3 squared and perpendicular is your 4. So just simplify it. X square is equals to 9 plus 16. So 9 plus 16 is your 25 x square. But we have to find x. तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे. स्क्वायर विल बी कैंसिल विद दैट रूट and we will get x is equals to 5 centimeter. So this is your length of hypotenuse. In other way, suppose that if we have another triangle, suppose that ABC and it is 90 degrees, suppose P, Q, R. So 90 degrees at Q, and in this way we have to find the base. Suppose this is your x centimeter, this is your 12 and centimeter, and this is your 13 centimeter. Sorry, 10 centimeter. So keep in mind one thing: the length of hypotenuse in a right angle triangle must be greater than the other two sides. जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे या उसको फाइंड आउट करेंगे, सो इट मस्ट बी ग्रेटर देन द अदर टू साइड्स. अब देखिए, इसी से हम जब उसको कैलकुलेट करेंगे एक्स को, तो एक्स की वैल्यू भी डेफिनेटली इट मस्ट बी लेस देन 12. सो विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इज जस्ट लाइक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज योर स्क्वायर प्लस p square. Hypotenuse is 12 square. Base is your x square we have to find, and then 10 square. So 12 square is 144 equals to x square. And so shift 100 to the left side, तो ये हमारे पास x square. So 140 on both the sides, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी. तो आप इस, क्योंकि 44 का एग्जैक्ट रूट पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको एज इट इज लीव कर दें. अदरवाइज आपको डेसिमल में लेना पड़ेगा. डेसिमल की वैल्यू आपकी 100% एक्यूरेट समटाइम नहीं होती. सो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है. सो 44 स्क्वायर रूट 44 सेंटीमीटर इज एक्सेप्टेबल. सो दैट वुड बी योर आंसर. और अगर हम 44 का रूट लेंगे तो ये आपके पास आएगा 6 पॉइंट समथिंग. सो डेफिनेटली 6 पॉइंट समथिंग इज लेस देन 12. सो ये हमने प्रूव करना था कि इसमें ये आपका 12 से लेस है. गॉट इट. अच्छा, अब इसमें ये भी है कि ये तो सिंपल डायग्राम्स के क्वेश्चंस है. अब समटाइम्स ये वर्ड्स प्रॉब्लम में भी आ जाता है, तो वी मस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस. तो उसके लिए देखिए मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ. विल सॉल्व देम. सपोज दैट इफ वी हैव लाइक दीज क्वेश्चंस. Right, suppose that question number 3. So if we crop it, so in question number 3, we can see here the question is given in verse problem based and we have to find the unknown side. तो अब देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. So in question number 3, ABC is your right angle triangle and the given condition is B is at 90 degree angle and find the length of AC. अब as it is, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इसमें आप देख सकते लाइक
बनेगी triangle ABC. This triangle is your A and B must be at 90 degrees. So we can write it as A, B and C. That was question number 3. ये वाला जो ऊपर शो हो रहा है. अच्छा, अब इसमें your in triangle ABC, AB is your 8 centimeter. So this is your 8 centimeter length. And BC is your 15 centimeter. We have to find the length of AC. This is your x centimeter. So simply we will use Pythagoras theorem to solve it. Hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. So which side is your hypotenuse here? X. So we can write it as x square is equals to 15 square plus 8 square. So 15 square is 225 plus 8 square is 64. So we can add them to find the value of x. So 2 to 5 plus 64. So we'll get 289. Now we have to find x. So it's mean we have to take square root on both the sides. Then you will get x. So this would be cancelled. So x, and what is the square root of 289? So square root of 289 is 17. So 17 centimeter is your length of x and x is your hypotenuse. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि x hypotenuse है और इसकी लेंथ अदर टू साइड से ग्रेटर है. Any confusion in it, right? So that was question number 3. And jump to another question of your words problem. Taking question question number 4. Post copy. Question number 4. In this question also you can see here, this is your words problem based question, and we can easily solve by using Pythagoras theorem, basically which we are doing here. So your question number 4. So question number 4, a triangle DEF is a right angle triangle at 5.5 meters and find the length. The triangle is DEF. So again, we will draw a triangle. Question number 4. Triangle DEF. So this is your triangle DEF here. Or your right angle is at E, right? In the question is given here right angle as at E. So this is your D, E, and here F. So what values are given here? DE is 6.7 meter. So 6.7 meter. And EF is your 5.5 meter. And we have to find DF. Again, we have to find hypotenuse, right? So definitely we'll use here the Pythagoras theorem. Hypotenuse square is your base square plus perpendicular square. So we'll use the given values. Hypotenuse is your x. That is, we have to find base is your 5.5 squared and perpendicular is your 6.7 square, right? You can use here, if calculator is allowed, you can use calculator. Otherwise, you can multiply it with the twice, just like 5.5 multiplied by 5.5. So if I multiply 5.5 with 5.5, so we will get 30.25. And 6.7 times 6.7, you can multiply it. So we'll get 44.89. Though simply we'll add them
44.89 plus 30.25. So we get 75.09. This is your x square, and we have to find x. So definitely we have to take its square root on both the sides. तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75.09 का आप स्क्वायर रूट ले लें सो स्क्वायर रूट ऑफ 75.09 so your answer is 8.67 meters. So that is your final answer. So students, you can see here the worst problem. On the behalf of worst problem, you must draw a diagram. So after that, your question will be easy for you. Right. So that's all for today. So in the next class, we will do 6 problems and difficult questions of this topic. तो उसमें हम कुछ compound shapes के questions करेंगे. तो अभी ये basic सा एक आपका था lesson regarding Pythagoras theorem. So